A very good evening. Welcome to Football Today. It's me, Shubham, and as usual, I'm joined by my brother, Opro. Well, we are here to discuss the current EPL scenario. The top of the table looks a bit dicey with Liverpool, Manchester City, and Arsenal with a difference of just 1 point, 61, 62, and 63. Anything can happen anything can happen. Any one team from the top three can, clinch the title. A lot of excitement and a lot of speculations going on with the EPL table. And over to you. What do you feel? Good evening, Shubham. Good evening to our viewers. Sorry for the delay of the video. Last video बहुत last मतलब बहुत पहले आया. So very sorry for the delay. पर हाँ नया वीडियो आ रहा है आ चुका है रहता. So do stay tuned for more videos. वीडियो को end तक देखना and do like and share and subscribe to our channel please. And माफ कर देना कि वीडियो लेट आ गया. So हाँ we'll try to be like more updated and regular with our videos. And very quickly moving to Premier League जो तू बोल रहा था हाँ very interesting. We have discussed this in previous videos also. Premier League is super interesting. 1, 2, 3 चल रहा है. And मैं भी बोल चुका हूँ तू भी बोल चुका है कि we are thinking that this is going to go like this till the last match day. 1 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा तीनों टीम में. 1, 2, 3 शायद चेंज हो जाएगा पर मुझे लगता नहीं कि पॉइंट डिफरेंस कुछ ज्यादा इधर उधर होने वाला है. ऐसा ही Right, करीब करीब कुछ रहेगा. right, वो इंटरेस्टिंग एज हेल. मतलब प्रीमियर लीग इज द ब्यूटी ऑफ प्रीमियर लीग आई विल से. वी आर गेटिंग टू विटनेस इट अगेन एंड इस बार कुछ अलग ही हो रहा है. 3 टीम्स आर कम्पीटिंग एक्सेप्शनल आई विल से. मतलब ये शायद मतलब दिस विल बी गोइंग डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स. अगर ये ऐसे ही खत्म hopefully. हो रहा है ना Hmm. दिस कैन गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स बिकॉज मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा है कि 3 टीम्स आर सो क्लोज. Right, ये होता नहीं है नॉर्मली. 2 टीम के बीच में ऐसा होता है नॉर्मली right, देखो. right. आई मे बी रॉन्ग कि पहले पहले हो चुका है शायद. आई डू नॉट हैव दैट मेमोरी. पर एज फार एज माय नॉलेज गोस 3 टीम के बीच में इतना ज्यादा क्लोजनेस आई हैवंट सीन. क्लोजनेस ऑफ पॉइंट्स टिल से And 63, moreover, 62, at this phase 61. of the season, okay, 3 points for one league are sitting above 60 points. I mean, एग्जैक्टली. it's hard to ऐसा see. होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. इट इज नॉट Right, पॉसिबल. ये प्रीमियर लीग है इसीलिए पॉसिबल है. exactly. दूसरे इसमें शायद ऐसा नहीं होता. Right. तो यही मतलब प्रीमियर लीग दिस इज इंटरेस्टिंग. मतलब इसीलिए इतना सारा द मैक्सिमम फॉलोअर्स आर ऑफ प्रीमियर लीग इन कंपैरिजन टू द अदर लीग्स. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट फैक्ट. एंड हाँ मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल द फर्स्ट गेम जो Hmm. टॉप में हुआ लिवरपूल वर्सेस नॉटिंघम. तुझे लग रहा था मुझे भी लग रहा था कि चलो आज आई वाज टू कॉल यू दैट डे व्हेन ऑलमोस्ट द 90 वाज ओवर. फिर मैंने खाना वाना खा के देखा कि यार ये क्या ही हो गया. 1-0. मतलब एट द एंड उन्होंने गोल मारा. मतलब अरे मैं प्रोबेबली तो श्योर ही था लास्ट. कि मतलब ड्रॉ ही होगा. अचानक से मतलब नोटिफिकेशन आया कि डार्विन नूनियज ने की 1-0 कर दिया. अरे क्या भाई. चलो वहां पे पानी फिर गया. मतलब पूरा पानी फिर गया. मतलब सिटी और आर्सेनल के ड्रीम्स में कि चलो लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप करने वाला है. हुआ नहीं. देन कमिंग टू मैनचेस्टर डार्बी द ब्लू वर्सेस द रेड डार्बी. डार्बी वो था नहीं. स्कूल बॉयज खेल रहे थे. लग रहा था प्रोफेशनल फुटबॉलर्स के साथ. स्टैट्स देख के क्या ही बोले अभी. शर्मनाक स्टैट्स है. बहुत ज्यादा ही शर्मनाक स्टैट्स है. इफ यू आर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन व्हिच आई एम बहुत ज्यादा ही शर्मनाक है. मतलब हालत बहुत खराब है आई से. कुछ चीजें हद से ज्यादा बाहर जा चुका है अकॉर्डिंग टू मी. जो जाना नहीं चाहिए था. दिस इज अनएक्सेप्टेबल. 3 shots 1 on target in a derby. हाँ we can accept that. चलो if you are winning it or keeping it in a draw. पर Hmm. ultimately scoreline matters boss and it's going Right. 3-1. So 3-1 scoreline कहाँ का ही मतलब क्या ही डिफेंस. एंड He was सिटी scoreline with a possession of 73% to City. माय Right. गॉड एग्जैक्टली 73-27 पोजीशन है. 27 shots on target shots out of which 8 have been on target. Technically speaking, the total number of shots of Manchester City is same as the possession of Manchester United in the entire match. So this just shows what Manchester City has done to Manchester United Oh in that God. particular match. ऐसा ये होता क्या नहीं. बोल दिया रे.
आई डू नॉट रिमेम्बर एनी सच इंस्टेंस जो अभी मैंने बोला, आई डू नॉट रिकलेक्ट। मतलब हो सकता है कि अगर एक बहुत अच्छा टीम है और एक वीक टीम है, ऐसा हो गया, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं हमने। वो देखा है, बायर्न म्यूनिख करता है ऐसा, 34 शॉट्स, 36 शॉट्स वो लोग मारते हैं कभी कभी, पर दे प्ले अगेंस्ट मच वीकर ओपोनेंट्स ओवर देयर। पर यार यहाँ पे डर भी है, एंड डर्बी में आप ऐसा खेल रहे हो, वहां पे रैशफोर्ड इज कमिंग एंड स्कोरिंग अ वर्ली, ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, ये क्या ही गोल हो गया, मतलब व्हाट इज दिस, आउट ऑफ द ब्लू आके शॉट मार दिया, सेलिब्रेशन पूरा मोड ऑन। उसके बाद मैंने बोला ना कि जो तूफान आता है उसके पहले एक काम होता है ना, जैसा लाइक धीर स्थिर हो जाता है सब कुछ, मतलब एक थम सा जाता है समा। वो हो राइट, गया मैनचेस्टर सिटी के स्टेडियम में कि अचानक से रैशफोर्ड ने क्या कर दिया। राइट। पर उसके बाद मैनचेस्टर सिटी जस्ट शोड टू द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली टू द यूनाइटेड फैंस, कि वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे। सो आई एम I टॉकिंग mean, अबाउट, it's and I being a football enthusiast, whenever I am supporting beats whenever I'm supporting any team or not supporting any team, right? I tend to analyze what's happening on the football pitch off the ball. हाँ And बिल्कुल, as far as my observation goes, their off the ball movement, okay, was pretty good. I would say Manchester United's off the ball movement. But if you want to control a football match, your on the ball movement should be the best, not the off the ball movement. And they were unable to stick 5 to 6 passes continuously at a stretch. बॉल ही नहीं This मिल is रहा था ना। unacceptable. एग्जैक्टली, दे आर एग्जैक्टली जो तूने पॉइंट आउट किया, वेरी इंटरेस्टिंगली पॉइंटेड आउट, 5 or 6 passes they are not being able to stitch at a single chance. At a stretch, we did not see Manchester play 5 or 6 passes. The only activity Manchester United was doing that day in that particular derby, I will say, just that the ball was entering the city box, probably a cross from De Bruyne, a cross from Foden for Haaland, a cross from Bernardo Silva, a cross from Doku, but they are trying to cut in to the defense. And United are just kicking the ball out of the penalty box so that कुछ भी करके बॉल यहाँ से दूर चला जाए। That's the only sole target probably they came down with. Right. ठीक है ना? एंड कूडोस टू राफेल वारान, आई विल से, उस दिन वो बंदा था इसीलिए बहुत सारा गोल्स बच गया। थैंक यू Well, टू हालैंड, आई विल से, जो गोल उसने मिस किया पता नहीं यार, ये मतलब दैट विल गो इन द फनी मिस सेक्शंस फॉर श्योर। right. हाउ डिड ही मिस दैट, आई हैव नो आइडिया, पर उसने वो मिस किया है। But just shifting from a Haaland and a KDB perspective to a different player of Manchester City who is now rocking the entire world right now, according to me, Phil Foden. He's superb. He's matlab, if not the best, among the top three, I will say, Right. in Premier League right now. Also Saka, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में। पर हाँ, अभी टॉकिंग अबाउट फिल फोर्डन, superb, wonderful player, superbly dominating the position of the ball movement, on the ball movement, बॉल मिलने के बाद क्या कमाल का कंट्रोल कर रहा है यार बंदा, Hmm. बिल्कुल। ब्यूटीफुल कंट्रोल ऑन दी बॉल, मतलब बॉक्स के जाने के बाद बॉक्स में अगर उसको बॉल डिलीवरी उसको मिल रहा है, सच Hmm. स्विफ्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्रोल एंड इज स्कोरिंग सो फ्रीली। Right. This just shows like, if the environment is good, Right. it just shows in the player and just shows in the entire team. And हाँ, मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड डर्बी यही है, दे हैव थ्रैश्ड यूनाइटेड, एंड टेन लाज शर्म उसने खो चुका है शायद, पता नहीं यार, पर क्या ही बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि हम फिफ्थ भी हो Oh गए, my God, his press नेक्स्ट ईयर ईपीएल conferences. में क्वालिफाई कर जाएंगे, दिस वाज नॉट प्रोबेबली वन ऑफ आवर वर्स्ट परफॉर्मेंस, इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ आवर गुड परफॉर्मेंसेस, इज रेटिंग दिस परफॉर्मेंसेस। वो सोचा कि ये परफॉर्मेंस अच्छा था यूनाइटेड का। देखो भाई, तुम मैनेजर अपॉइंट किए हुए हो, ठीक है, तुमको डिफेंड करना है टीम, लेकिन ये जो कर रहा है ना, ये टीम को ये पैम्पर तो कर रहा है। डिफेंडिंग है यार, ये तो पैम्पर कर रहा सरासर मतलब उसकी खुद की गलती वो छुपा रहा है, इट्स सिंपल एज दैट। है। ही इज अनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग द टीम राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू राइट। मी। आइदर ही इज अनकेपेबल ऑफ द प्लेयर्स डू नॉट हैव द पर्टिकुलर कैलिबर, कुछ तो हो रहा है, ट्यूनिंग तो बिल्कुल देखो भी नहीं। भाई, तुम अगर बेसिक फुटबॉल खेलना भूल जाओगे, ठीक है, पूरा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे एकदम डिपेंड होके बैठ जाओगे, सो व्हाट विल हैपन, राइट? एवरी टीम विल कम एंड एब्सोल्युटली डिमोलिश यू। एग्जैक्टली, So that is एग्जैक्टली, happening if you are waiting and stopping and looking here and there just to get a counter attack out of everything, every damn fucking thing. So obviously you can't expect that you will win the
every game and change the course of play if the opponent has the upper hand. If opponent has the upper hand, you yourself have to change the course of play, not with the help of any counter attack. This Exactly. particular thing needs to be learned. I mean, Eric Ten Hag needs to learn this thing. I don't know why what's happened to him at Ajax. His tactics were, I would say, very good. His tactics were. हाँ, For बिल्कुल some बिल्कुल. reason, he's not doing the same in Manchester United. I don't know why. He's backed by uh, good players. I wouldn't say great players, but good players. But I don't know why he has the यार quality of ये तो एक्सक्यूज Varane. नहीं है ना, मतलब आई Right. डोंट थिंक दिस कुड बी एन एक्सक्यूज फॉर एनी क्लब कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है तो इसलिए हम खेल नहीं पा रहे हैं. दिस कैनॉट बी एन एक्सक्यूज. ये कब तक Right. चलेगा, ये कब तक चलेगा? अगर प्लेयर्स सब सब आ भी जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, तो भी उन लोगों ने क्या ही कर लिया लास्ट 5 और बिल्कुल. 6 ईयर्स में, उन लोगों ने क्या ही कर लिया? Hmm. एटलीस्ट Exactly. इफ यू आर नॉट विनिंग ट्रॉफीज, प्ले अ नाइस ब्रांड ऑफ फुटबॉल, बट दे आर नॉट अनेबल टू डिलीवर अस दैट आल्सो. Right. तो यार ये तो यूनाइटेड, ये देख के मैं तो हैबिचुएटेड हूँ नहीं, पर हाँ, जितना बात करे वो मतलब दिमाग ही गर्म होगा. सो जस्ट मतलब कीपिंग दिस डर्बी असाइड, जहाँ पे थ्रैश कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को, टू अनदर थ्रैशिंग. आर्सेनल, तेरा ही टीम है यार, गानास वेल ऑन गर्ल्स ब्लेजिंग, जो मतलब जो वर्ड है, super. Arsenal is just playing great. The score line, I mean the score lines, not a line, the score lines of the last 7 matches, zero मतलब 6-0, 4-1, 5-0, 6-0, 3-1, 2-1, 5-0. क्या है? What is this? मतलब 7 matches में they are scoring 30 goals, 4 या 3.5 कुछ गोल एवरेज ऐसा है. साका खेल नहीं पा रहा था सीजन के बिगिनिंग में, अभी क्या ही कमाल का परफॉर्म कर रहा है. What are your opinions? मतलब, what do you think? Is this the best of Arsenal we are seeing right now, or is there greater things to come? वो जैसा टॉनिक रहता है ना, वो ये टीम में ना एक तेल का टॉनिक लिया हुआ है दुबई से, ठीक है. Okay. ये उधर उधर गया था वो, पिछवाड़े में एकदम तेल का टॉनिक डाल के लाया इधर, Okay. ठीक है. So everyone is sleeping very well, and they are getting. I mean, every department of on-field department, right? Everything is clicking from defense to attack to final third entries to the XGs. XGs also are very very good in Very all the high, matches. super, yeah, Yeah, yeah. I mean, all I wouldn't say all the teams are from the lower, cadre, just नहीं यार, because क्या लिवरपूल को उन लोग Liverpool कन्विंसिंगली हरा exactly, दिया, कन्विंसिंगली exactly, हरा दिया. टेबल टॉप को यू आर डिफीटिंग दैट कन्विंसिंगली, तो दिस शोज यू right. कैन डू दैट. Right, obviously. So, I mean, yeah, everything is looking good as of now. The previous season, this particular form in which they are in right now, okay, we saw this particular thing in the first half of the season, but they were unable to continue it in the second half. But hopefully, this season, look, why we don't have, the license to say that we can win the league just because we have lost a couple of matches here and there, and we are somehow dependent on City and Liverpool. Okay, so we can't say that we have the power to dictate the league and get the cup in our hands. But what we can expect, what we can do, we can win the matches and at least try to win the matches. Obviously, every match will not go in our favor, right? It's not possible. We are not City, right? The amount of artillery which they have right now, we are not City. So वही बोल रहा था कि मतलब we have to win the matches which are in our hands. बाकी let's expect for the best, and let's see what Liverpool and City do in the days to come. बिल्कुल, बिल्कुल, यही है. एंड जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस अगर हम बात करें, दे आर सिटिंग इन थर्ड पोजीशन आफ्टर शोइंग सच डोमिनेंस इन द लास्ट 7 मैचेस, स्कोरिंग 30 ऑट गोल्स इन 7 मैचेस. जस्ट शिफ्ट टू डिफरेंट लीग्स. तो पहले तू देख ला लीगा, रियल मैड्रिड दे आर लूजिंग, नॉट लूजिंग, दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स. कैसे भी करके चलो, मतलब वो that was a very मतलब dicey incident, but they have dropped points, simple as that. Hmm. Girona could not capitalize, Barcelona could not capitalize, ठीक है ना? फिर सीरिया में इंटर मिलान are sitting at the top comfortably with 15 points gap between them and their next best. So that वो लीग तो खत्म है. Talking about French league, बात करना बेकार है. Very simple as that. And moving to Bundesliga, वहाँ पे पहला बार शायद after 11 years we are getting a new champion, 10 points gap में, and Leverkusen should seal the deal. पर वहां पे बायर्न म्यूनिख का इतना गंदा फुटबॉल खेल रही है, दे आर नॉट अप टू देयर बेस्ट. हैरी केन इज नॉट बीइंग अप टू डिलीवर, मतलब वो गया
तब से मतलब ऐसा शुरू हो गया बायर्न म्यूनिख में कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू विन। उसका बैड लक है या क्या है तो ये आने वाले सीजन में पता चल जाएगा, बट जस्ट कीपिंग दैट असाइड, बायर्न म्यूनिख आर नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल, बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दे आर सिटिंग ऑन नंबर 2। और यहाँ पे आर्सेनल दे आर डोमिनेटिंग लाइक दिस। आई एम प्रीटी श्योर अकॉर्डिंग टू मी, इफ दे वुड हैव बीन प्रेजेंट इन एनी अदर लीग अदर देन प्रीमियर लीग, दे मतलब अगर टॉप पे भी नहीं होते ना, वुडंट हैव बीन टॉप आल्सो, या 2 में तो होते फॉर श्योर। यहाँ पे थर्ड Right. में है यार, इतना अच्छा फुटबॉल खेल के यू आर थर्ड, तो दिस जस्ट शोज लाइक व्हाट प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट एंड हाउ Right. गुड मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एंड आर्सेनल आर राइट नाउ। Right. Such important and such मतलब क्या ही बोले dominating performances, and they have to keep on doing this. They Right. just cannot afford to sleep even a single match. इतना ही टेंस चल रहा है। बिल्कुल। Talking about the coming upcoming fixtures, Manchester City Liverpool can be something very interesting for Arsenal अगर ड्रॉ निकल आए वहां पे। फिर हम्म, आर्सेनल का भी मैच है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, हाँ वहां पे हाँ। भी क्या होने वाला है आई डोंट नो। तो these डाइसी matches are सिचुएशन बड़ी। वेरी डाइसी, आई विल से वेरी डाइसी, एंड कुछ पता नहीं अभी क्या होने वाला है, कितना देर तक ये चलने वाला है, इज इट गोइंग टू गो टिल मैच वीक 38, कितना बीपी और प्रेशर तेरा और बाकी जो फैंस है लिवरपूल या मैनचेस्टर हाँ, सिटी का हाई होने वाला है, लो होने वाला है, ये तो देखने को मिल ही तू जाएगा। देख रहा था तो कल एकदम, मैं एकदम पूरा सेकेंड हाफ में पूरा एकदम आई वाज ऑलमोस्ट almost asleep, but I couldn't sleep till the end of the match. राइट। That's because I had a this sort of panic attack. Like what can I mean? I was just expecting for the worst. Okay, the only way to survive this pressure is you have to expect for the worst. From there, if it goes your way, then it's all okay, very good. Otherwise, you have to expect for the worst. पर हाँ यही है, मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज प्रीमियर लीग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ Hmm. प्रीमियर लीग। बाकी लीग भी अच्छे हैं, पर इतना मतलब कंपटीशन बाकी लीग में है नहीं, टू बी वेरी Right. ऑनेस्ट। And this season मतलब will be going down in the history books of Premier League for sure. इतना competitive है, 3 teams are competing so close. So हाँ, this is Premier League. We will be bringing watch alongs, we will be bringing Hmm. videos to our channel, latest updates आते रहेंगे, videos आते रहेंगे। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड up to you. Yeah, thank you for joining in. We expect your comments in the comment section, and we would like to get your feedback regarding what we need to improve and what are the pros and cons of the football today, which we are covering over the past 2 months or Yep. so. Right. So thank you for joining in. Have a great day. Have a great week in front of you, and stay well, stay fine, stay healthy, stay fit. Good night. Peace.